Good morning, students. Most welcome in my online class. Dear student, today I am going to start the next paragraph of same chapter, devotional path. Devotional path. Listen here. The paragraph title is Philosophy and Bhakti. Sankara, one of the most influential philosopher of India, was born in Kerala. Was born in Kerala in the 18th century. He was an advocate of Advaita, or the doctrine of the oneness of one individual soul and the Supreme God, which is the ultimate, really the thought that Brahman, the only or ultimate really was the formless and without any attribute. He considered the world around us to be an illusions or Maya, and preached the renunciation of the world and adoption of the path of knowledge. To understand the true nature of the Brahmins and attain the salvation. Ramanuja, born in Tamil Nadu in the 11th century, was deeply influenced by the Albers. According to the best means of attaining salvation was through intense devotion to Vishnu, and Vishnu in his grace help the devotee to attain the bliss of the union with him. He propounded and doctrine the Vasist Beta, or the qualified oneness, in that the soul, even when united with the Supreme God and remained distinct. Ramanuja's doctrine and greatly inspired the new stand bhakti which developed in North India and subsequently. Right. Vasvanna Virasivism, we noted the earlier the connection between the Tamil Nadu Tamil Bhakti movement and the temple worship. This is the turn led to the reaction that is West represented in the Vaishnava movement initiated by the Vasabanna and his companion like the Alma, Alma Prabhu and Akamadevi. This movement began in the Karnataka in the mid-12th century. The Viraksha
Brak, Braxi was regarded too strongly for the qualities of all human beings and against the Brahmical ideas about caste and the treatment of women. They were also against all forms or ritual and idol worships. The saint of the Maharashtra from the 13th to the 17th century. Maharashtra saw a great number of saints, poets whose songs in the simple Marathi continue to inspire people. The poets important among them, they were the Jnaneshwar and Gyaneshwar. जो ध्यानेश्वर और ज्ञानेश्वर like Mahadev, Eknath and Tukaram, as well as a woman like Sakhubai and the final and family of the Chokamela who belong to the untouchable Mahar castes. This religion, a regional tradition of bhakti focused on the Bithala, a form of Vishnu, temple in the Pandharpur as well as in the nation's notion of the personal God residing in the hearts of the people, all people. And these saints poets rejected all forms of the ritualism, outward display of the pity and soul dependent waste on the birth. In the fact, they even rejected the idea of the renunciation and preferred to live with their family, earning their livelihood like any other person, while humbly serving fellow human beings in need. A few humanist idea emerging as they insisted that bhakti to study. I explained these two paras and नैनार वासा बन्ना और तमिलनाडु में जो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और स्टार्ट करने वाले लोगों के जो हमारे सेंट्स थे उनके बारे में बताया था. टुडे आई एम गोइंग टू सेंट ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के कुछ महान संत पैदा हुए जिनके द्वारा भक्ति मूवमेंट चलाया गया. तो फ्रॉम द 13th सेंचुरी 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र saw a great number of saint poets. महाराष्ट्र में बहुत से संत और कवियों ने उस धरती पर जन्म लिया और बोलबाला बनाया. अपने सॉन्ग से, अपनी भक्ति भावनाओं से
लोगों को जागरूक किया और लोगों को धर्म से जोड़ा। महाराष्ट्र हॉज ए ग्रेट नंबर ऑफ सेंट पोएट्स। महाराष्ट्र में बड़े बड़े महान, बहुत ही महान भक्त, जिन्होंने लोगों के लिए आत्मा और परमात्मा का एक सच्चा ज्ञान कराया अपने भजनों के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा। मराठी कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम वर द ध्यानेश्वर और ज्ञानेश्वर। ये दो भक्ति शाखाएं थीं। दीज आर द भक्ति वे ऑफ दानेश्वर, ध्यानेश्वर और ज्ञानेश्वर। ज्ञान के द्वारा और ध्यान के द्वारा उन्होंने बताया कि ईश्वर या प्रभु को केवल ध्यान और ज्ञान दोनों के द्वारा ही पाया जा सकता है। नामदेव और एकनाथ वहाँ के बहुत बड़े जो हमारे संत हुए हैं महाराष्ट्र के, जिनमें सबसे पहले नाम आता है नामदेव, दूसरे आते हैं एकनाथ, और थर्ड व्यक्ति हैं हमारे बहुत बड़े महान संत हैं तुकाराम जी। दीज सेंट्स आर मोस्टली बोर्न इन द महाराष्ट्र एंड दे give the lot of force. They tried to remove the mind of the population, the people, towards the bhakti and God, who belong to the untouchable mahar caste. देखिए, ये तीन जो महान संत हुए थे महाराष्ट्र के, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जी, ये एक छोटी जात से थे, अछूत जाति के से बिलोंग करते थे, जो महार जाति के थे, जिस जाति के बाबा B.R. अम्बेडकर और हमारी उत्तर प्रदेश की सीएम रह चुकी हैं मायावती जी, ये उसी कास्ट से बिलोंग थे, महार कास्ट से। महाराष्ट्र की जो महार कास्ट है उसको अछूत या लोअर कास्ट के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में। इन दिस रीजनल traditions of the bhakti focus on the विठल भक्ति, जो इस क्षेत्र में जो एक परंपरागत जो भक्ति का एक फोकस था, वो विठल यानी भगवान विष्णु पर जो है फोकस दिया जाता था। टेम्पल in the Pandharpur, it is the particular place of the Maharashtra, Pandharpur, जहां पर बहुत बड़ा इसका मंदिर का निर्माण कराया गया। पंढरपुर में बहुत बड़ा विष्णु मंदिर है, as well as on the nation of the personal God and resisting in the hearts of all peoples, जो हर एक व्यक्ति के दिल में बसा हुआ ये मंदिर बहुत ही महान टेम्पल माना जाता है। These people, the saints, the poets, rejected all forms of the ritualism, outwards display of the pieties, and people's differences based on the worth. These saints and poets rejected all forms of the rituals. इन्होंने भक्ति के बहुत से रास्तों को खत्म करा, जो आडंबर से भरे हुए कुछ प्लेसेस थे, उनमें उसको लाइक नहीं करते थे। Display on the petty and social difference based of the worth, जो समाज में भिन्नता पैदा करते हैं,
ऐसे भक्ति के रूल्स रेगुलेशन को उन्होंने खंडन किया, उन्होंने विरोध किया। इन द फैक्ट दे इवन रिजेक्ट द आइडिया ऑफ द रिनाउंसिएशन एंड प्रीफेred टू लिव विद देयर फैमिलीज। रिनाउंसिएशन, त्याग, to live with their families, earning the livelihood like any other person, while humbly serving fellow human beings in need। उन्होंने बताया इन सभी आइडियाज को त्याग करके आप अपने परिवार में रहें, परिवार में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करें, मेहनत करें और ईश्वर का भजन करें, ईश्वर को याद करें तथा नीडीज लोगों की रिक्वायरमेंट, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हों, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें और उनके साथ रहें। ये न्यू ह्यूमैनिटीज आइडियाज इमर्ज्ड एज दे इंसिस्टेड टू द भक्ति 108। उन्होंने 108 में भक्ति भावनाओं के जो रूल्स थे उनमें इसको ऐड किया और उसको बताया। Lay in the sharing others pain, दूसरे के दुख दर्द को बांटने की कोशिश करिए, उनके दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। एज ए फेमस गुजराती संत नरसी मेहता सेड, ये बात गुजरात के एक महान संत जिनका नाम था नरसी मेहता, दे आर वैष्णव्स who understand the pain of others. From here, to dear students, from this paragraphs to this paragraph, the saint of Maharashtra, you will find out only 4 questions. अब फर्स्ट क्वेश्चन कि write the name of saints who born in Maharashtra. You will write answer नामदेव, एकनाथ और तुकाराम. Again question is who was साखूबाई. साखूबाई कौन थी? You will write this Sakhubai the great devotee of the Vishnu. What is Mahar caste? Mahar caste, it is the lower caste of the Maharashtra, या untouchable of the Maharashtra. Next, who was Narsi Mehta? You will write the answer. The Narsi Mehta was the great saint of the Gujarat. Right? So these questions you can find out from the video. But whenever you can find out these questions when you will listen my video. जब तक आप वीडियो को पूरा सुनेंगे नहीं तब तक आप इसके एंटायर व्हाट आई हैव गिवन nobody can find out. Nobody can find out. So every student will listen video carefully and what did I say in the video, then you will understand. After then you can find out the answer. You can write question, answer and other activities whichever I have given in the entire the video. I will not
गिव एनी क्वेश्चन आउट ऑफ द वीडियो। मैं वीडियो से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा और ना ही कोई एक्टिविटीज में मेंशन करूंगा, क्योंकि अगर मैंने करूंगा तो नोबडी ट्राई टू लिसन द वीडियो। जब आप वीडियो नहीं सुनेंगे तो हाउ कैन अंडरस्टैंड, हाउ इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ एंड चैप्टर्स, राइट? This now questions the social order. This is an अभंग यानी मराठी डिवोशनल hymns bhajan of the Sant Tukaram. He who identifies with the battered and the beaten, mark him as a saint, for God is within him. He hold every forsaken man chosen to the his heart. He treats a slave as his own son. Says Tuka, I wouldn't be tired to repeat again, such a man is God in a person. Here is the abhang composed by the Chokamela's son. You made us how and low caste. Why didn't you face that face? A great Lord that who life and life over the food to eat. You should be ashamed of this. You have eaten the your home. How can you deny it? And Choka's son Kamdeva yani Karmala asks, why did you give me life? Next time I will explain this Nagpanthi, Siddhas and Yogis. The number of religious groups that emerged during this period. उस समय एक से एक बढ़कर धर्म संप्रदायों का उदय हो रहा था भारत के अंदर, और भारत में ये संप्रदाय दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे। हर एक संत सोई हुई जो बुद्धि थी उसको जगाने की कोशिश कर रहा था। भारत के लोगों में हर एक नई नई रिचुअलिटी का डेवलपमेंट होता जा रहा था। The number of religions group that emerged during this period criticize that ritual and other aspects of the conventional religion and social order. Using simple logical arguments, among them were the Nagpanthi, Siddhacharas, Siddhachars, Yogis, and they advocated renounces of the world. संसार का त्याग करना। अपने साफ शब्दों में उन्होंने बताया कि ये संसार का त्याग करके ही भगवान यानी परमात्मा से मिला जा सकता है। They advocated renounces of the world. To them, the path of salvation lay in the meditation on the formless, ultimately a reality, and the
religion of the oneness with it. To achieve this, they advocated intensive training of the mind and body through the practice like the yogasanas, yogasanas, breathing exercise, and meditation. These the groups became particularly popular among the low castes. Their criticism of the conventional religion created the group of divisional religion to become the popular force of the northern India. Okay, dear students, so in this today's from this video, you will listen carefully. I hoping that you will listen and find out 4 questions mentioned in your notebook with answer, and up to tomorrow you will send this pic in my WhatsApp of home assignment.